Hey guys, good morning. Today is day 18th of my journey and I'm up here क्योंकि अभी अभी मेरी एक क्लाइंट कॉल खत्म हुई है. I'm so sweaty because आवाज नहीं आ रही थी, so I switched off the fan and all of that. Okay, that's different, but I am here to give you an update that मैंने आपको बताया था कि I'm feeling very hungry and all of that, and I switched macros and I'm feeling much better. अभी मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा. It's 11:30 and I have to go down क्योंकि सुबह सुबह मेरी क्लाइंट कॉल थी. I did not get time to prepare my food और अभी क्योंकि टाइम नहीं था तो जो घर में बना है मैं वही खाने वाली हूँ. लेट्स सी घर में क्या बना है एंड आई विल स्वैप माई ब्रेकफास्ट विद माई लंच. दिस इज तोरी की सब्जी, आलू की सब्जी. दिस इज गोइंग टू बी माई ब्रेकफास्ट. इट इज सिमिलर टू वॉट आई ईट इन लंच बट दैट्स ओके. मैं लंच पे वो खाऊंगी जो मैं ब्रेकफास्ट में खाने वाली थी, दैट इज अंडे, बिकॉज प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस मील में हमारे बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं है. Always try to be happy with little things like this. Weather is making me happy and I just came out to talk to you guys because you guys make me happy. मेरे 30 day challenge को follow कर रहे हैं. जिस तरीके से आप लोग उसको actually में actively अपनी life का हिस्सा बना रहे हैं और उसके साथ साथ अपनी life में changes ला रहे हैं, that makes me realize that whatever I am doing is so worth it because you guys are actually changing your lifestyle because you are watching my vlogs. Every single day जब मैं आपके messages या comments पढ़ती हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि I am doing something worthwhile. So thank you so much for making me feel that. Look at the weather. The breeze is so cool. I wish हर जगह जहाँ से आप लोग मुझे देख रहे हो ऐसा मौसम होता. And I'm very happy that this kind of weather is there on Saturday क्योंकि सैटरडे को मेरा हाफ डे होता है. आई वर्क फॉर माई सेल्फ, लेकिन मैं आई वर्क फॉर माई सेल्फ ओनली बट आई कीप माई वीकेंड्स ऑफ. हमेशा अपने लिए अगर आप काम कर रहे हो तो भी आपको थोड़ा बहुत ब्रेक लेना चाहिए. सो दैट इज़ वॉट इट इज़. So 5 years पहले when I was losing my own weight and I was studying about nutrition left, right and center, I never knew that this is going to be my life where I will be making actual difference in people's lives health wise. And now when this has happened, it is very nice. I feel happy, I feel positive, so thank you. अभी बज रहे हैं 3 और मैं अपना लंच कर रही हूँ. कंटेनर आपको दिख रहा है, ये मेरे मील प्रेप आइडियाज़ के लिए यूज़ होगा. जब भी मैं बिजी रहती हूँ या मुझे कहीं बाहर जाना होता है टू अटेंड सम वर्क मीटिंग्स एंड स्टफ लाइक दैट, मैं इसी तरह के कंटेनर्स में अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तैयार कर लेती हूँ. इसमें स्टोर कर लेती हूँ. जहाँ जाती हूँ माइक्रोवेव में हीट करके आई जस्ट हीट इट एंड दिस इज़ द टेक्निक थ्रू विच आई स्टे ऑन ट्रैक. मैंने मील प्रेप वीडियो बनाया है इसके जस्ट बाद एंड दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू सी एज वेल. यहाँ पे मैं खा रही हूँ अंडा और एक चपाती, 2 अंडे की भुर्जी है. यू नो व्हाट, बहुत अच्छा मौसम लीड्स टू my cup of chai, and so many of you guys connect with me when I say that I love chai. After posting my videos and my love for chai, you have also started drinking tea without guilt and I'm very happy. Food should not always be accompanied with guilt. Food should be your soul happiness, and that is the purpose of me doing these kind of videos. देखो 3 तरीके की चीज़ें होती हैं जिसका हमेशा ध्यान रखो. पहला, healthy shouldn't always be bland, so healthy can be tasty और मेरी recipes इसका proof है. Second, motivation is what comes from within. No one else can motivate you. And of course, I do my job by creating content. I do my job by motivating my clients on a daily basis on WhatsApp. जब भी कोई मेरे साथ sign up करता है, I have this specific thing in my program कि मैं उनके साथ हर वक्त connected रहती हूँ on WhatsApp. हर वक्त मतलब Monday से Friday on WhatsApp, just to give them that push. Then third चीज़ होती है accountability. So when I started this 30 day challenge, I was accountable to you कि हर रोज़ मुझे 11 बजे वीडियो डालना ही डालना है, मुझे अपनी जर्नी शेयर करनी ही करनी है. वैसे ही अगर आप किसी की तरफ accountable होते हो तो आपकी जर्नी और ज़्यादा बेहतर होती है.
फॉर एग्जाम्पल इन माई वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स आई हैव अ प्रोग्रेस ट्रैकर जिसमें हर हफ्ते मेरे क्लाइंट्स अपनी डिटेल्स फिल इन करते हैं। उसी तरीके से आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैकिंग कर सकते हो, हर हफ्ते अपना वेट लो, हर हफ्ते अपने मेजरमेंट्स लो। इस तरीके से आप अकाउंटेबल रहोगे खुद को, किसी और को नहीं। सो दीज आर द 3 things which you should be taking care of while starting a journey of yourself on your own for improving your lifestyle. Remember, weight loss तो एक टाइम की चीज है, वो चली जाए। लाइफस्टाइल इज व्हाट कैरीज इट फॉरवर्ड। योर हेल्दी लाइफस्टाइल इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन द वेइंग स्केल नंबर। मैं बार बार ये बोलती हूँ बिकॉज आई डू ट्रूली बिलीव इन दैट। Okay, so now I'm going to have my cup of chai. It is 4:30 and अब मैं चाय पी के फिर आपसे मिलती हूँ जब भी मैं कुछ खाऊंगी तब। Hey guys, so I'm here outside doing my surya namaskars. As you guys know that I am doing 108 surya namaskar. I will be sharing with you the inhaling and exhaling of one full set of surya namaskars. Hope it helps you. Starting with inhaling, upward stretch, exhaling, going down, touching our feet, inhaling, putting one leg behind, exhaling, putting the other leg behind, inhaling, dropping our knees, exhaling, push up, inhaling, cobra pose, exhaling, pushing our legs behind in mountain pose, exhaling one leg forward, inhaling another leg forward, and exhaling upwards. This is how you have to follow your breathing. Exhaling again, inhaling one leg down, exhaling other leg down, inhaling push up, exhaling cobra pose, inhaling donkey, exhaling left foot forward, inhaling other foot forward and towards the sky, exhaling. This is one. So I finished 54 sets of surya namaskars. I am super tired. Hey all, it is 8 o'clock and it is dinner time. I'm having a very healthy salad. इसकी रेसिपी सेम चीज़ है, मैंने शेयर की हुई है लास्ट वीडियो में इसकी रेसिपी, and I'm going to have it. This is somewhere around 350 calories, high in protein and fiber, and I am very hungry, so let's taste it. कैरेट्स को हल्का सा आप स्टीम करके उसको सॉटे कर लो. इट टेस्ट रियली गुड. Hey guys, so finally the day is over. Day 18th is also over. I have been able to pull off the entire 30 days almost. मतलब 18 दिन हो ही गए हैं, सिर्फ 12 दिन बचे हैं of vlogging. Of course my journey is for 60 days and I'm going to be sharing my weekly updates about how my journey has gone on Instagram after this 30 days over. Don't forget to check me on Instagram. I'm having lemon water. It is because I just felt like having it, something little citrusy, and that's how I'm ending my day. And today's shout out goes to a very special message I received on today's vlog, which मतलब शायद 18 डे 17 का जो व्लॉग था उसमें निदा एस, मैंने उनका कमेंट को पिन भी किया है. शी हैज समराइज्ड माय एंटायर 18 days so well and how it has impacted, and I'm very happy. करने का पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि देखो मैं कैसे खा रही हूँ. ऑफ कोर्स मेरे डाइट प्लान्स और हर जो इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है. इट इज़ नॉट डिफरेंट, बट ये जर्नी शेयर करने का पर्पस था टू जस्ट मोटिवेट यू गाइज, एंड मैसेजेस लाइक दीज टेल मी दैट the purpose is getting solved. So thank you so much Nida, shout out to you, my AK army. This helps me keep going, and yeah, thank you so much. I'll see you guys tomorrow, day 19 सुबह 11 बजे. और कल का वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है. कल का वीडियो इट इज़ मील प्रेप वीडियो, सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी नाइस फॉर ऑल ऑफ यू आउट देयर हु आर बिजी विद वर्क, डोंट हैव टाइम टू गो इन द किचन एवरी टाइम यू नीड टू ईट. सो द वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू. आई होप इट इज़. अपने कॉमेंट्स मुझे ज़रूर बताना कि हेल्पफुल है कि नहीं. कल मिलते हैं सुबह 11 बजे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर, स्टे फिट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी. गुड बाय.